welcome back to the channel Your Tech Doc. My name is Pulkit and today's video about one of my favorite Apple accessory brand named Pitaka. Pitaka is a brand which is known for its carbon fiber aramid cases. ये एक ऐसा ब्रांड है जो कार्बन फाइबर का यूज करता है टू मेक्स इट्स एक्सेसरीज. एज यू कैन सी द वेबसाइट व्हिच आई हैव ओपन फॉर यू, दिस इज ऑल अबाउट carbon fiber cases. And the USP of carbon fiber is that it is very thin, light as well as strong. I've been using Pitaka accessories for almost I guess 3 to 4 years since I guess iPhone 11 was launched. And today I have ordered a product which I was basically searching for a long time, which is almost sold out every time. Even right now you can see on the website it's marked as sold out, but I was lucky enough to get this product with me. So it is known as Air Omni Lite, and if you're looking for a solution जिससे आपका एप्पल वॉच, आपका आईफोन, आपका एयरपॉड्स, आपका आईपैड, आपका मैकबुक और कोई छठा और कोई डिवाइस हो वो एक साथ चार्ज हो जाए विदाउट एनी हैसल, then this is the solution for you. So without further ado, I would be basically taking you to the unboxing of this particular product. But before that, let me show you one more thing. This product is also available in India and you can see the hefty price tag which is 57,200. Because अगर आप कोई भी product import करते हैं, you have to pay a hefty custom duty. And above that, अगर आप किसी platform पे उस product को देख रहे हैं, यानी कि जो seller है उस particular website को एक selling fee भी दे रहा है और उसके बाद आपको ये price tag मिलता है. So let's jump back directly to the unboxing of the Pitaka Air Omni. Alright guys, so I've received the Pitaka Air Omni Lite and now I'm quick unboxing to show you what all are the content in this particular box. And as I mentioned, I am a user of Pitaka products for a very long time. You can see on my table there are a few products which I've kept for just a glimpse that whatever I say I mean it. And the review is not at all sponsored. The product is being opened by me for the very first time. I'll show you what all are the contents inside the box so that you can also match the same from the ones you get from the website. This is how the first hand look of the Pitaka Air Omni Lite charger looks like. The very first thing you will see is the picture of the 6-in-1 charging dock with few devices placed over it. The left hand side, the bottom left hand side shows that it is a 6-in-1 charging dock where you can also toggle between Lightning and Type-C cables. There's a positionless wireless charging system. You can charge your Apple Watch using your smartwatch charger. I'll show you in the later stage how to do that. And it is also enabled with 18-watt fast charging. And obviously, as I mentioned, it is made up of a high quality aramid fiber material. So let's open the box and see what comes inside. Okay, so the very first thing you will see is this hard shell carrying case with a Pitaka branding over it. It's a zipper case, very sturdy, very high quality case, and once you open it you will be greeted with a thank you note from Pitaka. And other things which I find here is this pocket dock and some accessories. I'll open it afterwards. Then there is obviously the charging station. I'll keep it aside and let me tell you it's a bit heavy, which also gives me a glimpse of the quality of the material. It's approximately 500 to 600 grams. And then there is obviously the power supply, which is again neatly packed. If you see, I'll have to just unwrap it and the adapter comes out. Very nice packing from Pitaka. Let's move forward. Apart from these, there is this accessory pouch and let me open what comes inside. The very first thing which comes in my hand is this cable, and surprisingly it's a micro USB cable. Not sure why it is there. Then there is this stand holder and it is a magnetic stand holder. Let me show you. You see कैसी आवाज़ आई? इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक होल्डर. मेरे को इसे वापस उठाने के लिए बहुत अच्छी खासी ताकत लगानी पड़ रही है. तो नाइस फीचर फ्रॉम Pitaka. इस पर अगर आपको अपना फ़ोन वगैरह या आईपैड आपको इस पर लगा के कुछ मूवी वगैरह या मीडिया कंज्यूम करना है या सिंपली आपको चार्जिंग के लिए लगाना है, यू कैन डू दैट. एंड देयर इज वन थिंग व्हिच आई जस्ट सॉ, stick-ons I guess for the bottom of the stand to make sure it doesn't move anywhere. And thing else, okay, there is this key kind of a system for basically removing and installing the Apple Watch charge. Okay, I'll show you what
and how does it work. Let me first of all show you the very beautiful feature from this device. आपको यहाँ दिख रहा है there is this type C port. So at the back of this charging station there is the switch. If I move it, you will see it has turned into a lightning port. दोबारा देखिए, अभी lightning port है यहाँ पे, इसे और zoom करता हूँ. Again I'll click it and it has converted into a type C port. और अब मुझे अगर इसे type C port को यूज करना है तो बैक में जो इसके ये पैनल है इसे ऐसे पर ले आना है and now you can see the type C port is available. आपको अपना iPad Pro या कोई भी Android डिवाइस यहाँ पे चार्जिंग के लिए लगाना है. ये पीछे उसका एक स्टैंड हो गया और यहाँ पे उसका पोर्ट अवेलेबल है. सेकेंड बेस्ट फीचर ऑफ दिस चार्जर, ऑन द राइट हैंड साइड अगर मैं इस रेड बटन को दबाता हूँ, वाओ, यू सी हाउ ब्यूटीफुली दिस Apple Watch चार्जर जस्ट कम्स आउट. एंड ऑन द इनसाइड आपको देखेंगे यहाँ पे कोई भी चार्जर की केबल नहीं दिख रही है अभी, इसलिए बिकॉज इसमें ये जो आगे लगा हुआ है ये सिर्फ एक डेमो वाइट कलर का एक सॉकेट है. बट इस पर्टिकुलर डिवाइस के अंदर हम अपना एप्पल वॉच चार्जर इंस्टॉल करेंगे. कैसे करेंगे, आई विल जस्ट शो यू ओवर अ स्मॉल वीडियो इन दिस पर्टिकुलर रिव्यू इटसेल्फ. एंड बट ये जो इसका डिज़ाइन है इतना ब्यूटीफुली पटाखा ने बनाया है कि इवन आफ्टर इंस्टॉलिंग दी ओरिजिनल एप्पल वॉच चार्जर आपको दिखेगी भी नहीं कि यहाँ पे इसकी केबल कहाँ से इंस्टॉल हुई है. तो इसका मैकेनिज़्म यहाँ से पीछे से है. आप ये डिवाइस जो है ऐसे खोल सकते हैं एंड यहाँ पे से आपकी केबल निकलेगी और यहाँ अटैच हो जाएगी. बहुत ब्यूटीफुल डिज़ाइन है. जस्ट गिव मी अ मिनट एंड आई विल कम बैक टू यू विद द इंस्टॉलेशन पार्ट. ऑल्सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे देयर इज दिस पुश बटन, ये एक हिडन ड्रॉ. अगर आप अपने कोई सीक्रेट डिवाइसेस यहाँ रखना चाहते हैं, could be a coin, could be a pen drive, could be an SD card, you can place it here. And then what else do we have? There are two other ports for charging. यहाँ पे एक Type C पोर्ट है और एक USB A पोर्ट है. इसमें से आपको मैक्सिमम 18 वाट की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है. और बैकेंड साइड पे ऑब्वियसली दिस पावर प्लग इज़ फॉर द एडाप्टर. एंड अगर हम यहाँ पे देखें स्टेशन पे, तो ये जो एरिया दिया हुआ है यहाँ पे आप अपना फ़ोन रख सकते हैं चार्जिंग के लिए. ये आपका एयरपॉड के लिए यहाँ पे दे रखा है डिज़ाइन. एंड आई गेस दैट्स ऑल. सो अगर हम देखेंगे टोटल 6 डिवाइसेस हो जाएंगे. सो टू शो यू हाउ दिस थिंग एक्चुअली वर्क्स, जस्ट गिव मी अ सेक. Let me install the Apple Watch charger and plug in the device to show you how this device. So guys, I have installed the charger and the setup is ready. And it easily charges your 6 devices. अब मैं आपको इनकी चार्जिंग कैपेसिटी भी बता देता हूँ. सबसे पहले जो इसका मल्टी कोर चार्जिंग सिस्टम है, यानी कि ये वाला, अगर आप कोई भी अपना आईफोन चार्ज कर रहे हैं विदाउट टेकिंग केयर कि आपको कैसे इस चार्जर को प्लेस करना है, यू सी आई जस्ट प्लेस द चार्जर विदाउट इवन थिंकिंग. इसके नीचे 3 कॉइल्स हैं जिसकी हेल्प से आप कहीं पे भी इसको चार्जिंग के लिए रखेंगे, इट विल स्टार्ट चार्जिंग. इट हैज़ अ मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 7.5 वाट्स का जो 18 वाट का चार्जिंग सिस्टम है यहाँ पे. यानी कि अगर मैं अपने आईफोन को यहाँ पे अगर चार्ज कर रहा हूँ तो इट विल स्टार्ट चार्जिंग विद द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 18 वाट्स. आपकी एप्पल वॉच है, एप्पल वॉच को आपने सिंपली यहाँ पे रखना है एंड इट विल स्टार्ट चार्जिंग. सी, and then there you have the option for AirPods is also started charging. 4 devices are right now in place. 5th device is, let's see, I have an iPad here. मैंने केबल ऑलरेडी इंस्टॉल कर ली है. दिस इज़ फॉर द टाइप सी पोर्ट. तो मैंने टाइप सी पोर्ट यहाँ से लिया है और ये टाइप सी को इंस्टॉल कर दिया है. एंड आप देख सकते हैं ये भी मेरा चार्जिंग स्टार्ट हो गया है. लास्टली आई हैव iPhone SE with a Mophie juice pack installed over it. So I thought why not to use the micro USB cable for it. So मैंने यहाँ पे micro USB port को भी इसमें लगा दिया है. And you will see that the Mophie charging case has also started charging. So you see all those 6 devices I was talking about, they are charging smoothly without any kind of hassle. The only thing I would say about it कि इसके अंदर जो आपको चार्जिंग कैपेसिटी दी गई है वो 18 वाट की है, जो शायद थोड़ी ज़्यादा हो सकती थी. अगर इसमें कुछ 70 या 60 वाट की चार्जिंग होती तो शायद मैं अपना मैकबुक भी चार्ज कर सकता था. बट इट इज़ नॉट देयर. द मैक्सिमम कैपेसिटी इज़ ओनली 18 वाट. एंड ऑल दीज devices which I am right now using are from Apple. And to tell you, it is a M5 certified device. यानी कि आप अपने Apple devices को बिना झिझक करे इससे चार्ज कर सकते हैं. That is made for iPhone accessory.
एंड आप एंड्रॉइड डिवाइसेस को भी इसमें आराम से चार्ज कर सकते हैं. So guys, this was my unboxing and review of the Pitaka Air Omni Lite 6-in-1 charging solution. I hope you liked it, and if you do, smash the like button, subscribe to the channel and share as much as you can because this motivates me to bring more such videos on the channel. Thank you. See you in the next one.